Hello students, in my previous lecture I have already discussed different type of cubic unit cell, that is your simple, body centered, face centered, and fourth one is end centered cubic unit cell. That is cubic unit cell type is simple, body centered, and face centered. So in simple, the atoms are present only at the corners. So contribution at each corner is 1 by 8. So total there are 8 corners, so the contribution is 1 by 8 into 8, that is your 1. In body center, the atoms are present at the corners as well as at the center of the unit cell. So from corners the contribution is 1 by 8, so total contribution is 1 from the corners, and from the center of the body the contribution is 1. So the total number of atoms in BCC unit cell is 2. In FCC, the atoms are present at 8 corners as well as 6 face centers. So the contribution from each corner is 1 by 8 into 8, that is 1, and from each face the contribution is half. So from 6 faces the contribution is 3. So total number of atoms in FCC unit cell is 4. And in ECC the contribution is 2. There is 2 particles at any opposite end. Opposite end means कि पचारे कि अपोजिट एंड मीन्स कौन खाली आप लेफ्ट राइट कले कौन टॉप और बॉटम हो पारिबोनी कि एनी टू अपोजिट एंड मीन्स ताको मध्ये हमें अल्टरनेट फेस बोली भी कहि परिबा मीन्स सपोज मु दिस एटा को कंसीडर करली ये रहला हमर टॉप पोर्शन टॉप फेस बोली मु कंसीडर करली सो हियर इज बॉटम फेस एठी भी रहि परिबो सो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर रहि परिबो जदि मु एपड फेस को नउची ताले मोर बैक फेस को भी मैं कंसीडर करिबी एठी मध्ये एटम रहि परिबो जदि लेफ्ट साइड भी नहीं परुची राइट साइड रे भी मैं कंसीडर करिबी एनी टू मोर पॉइंट्स ला एनी टू अपोजिट एंड तो जदि अल्टरनेट फेस भी मैं कहि पारुची सपोज दिस इज योर टॉप फेस तो अल्टरनेट केमते हबो गोटे छडा गोटे मींस ए फेस रे जदि रहिला ए फेस छाडी देबो ए फेस रे रहिला जदि ए फेस रे मैं कंसीडर करची लेफ्ट फेस देन सपोज एटा को छाडीली देन ए फेस भी हबो तो एनी टू अल्टरनेट फेस रे मध्ये हमें वर्ड ताको देई परिबो अपोजिट फेस और एनी टू अल्टरनेट फेसेस ठीक अछि तो ताको हमें एंड सेंटर बोली कहला सो ओवरऑल हमें क्यूबिक पाई पढुचे तो क्यूबिक रे हमर रहला सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मोर कोटे क्वेश्चन थिला कि जदि कोनोसी कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बा गोटे एटम जदि एज रो सेंटर रे रहबो एज मींस दिस इज योर एज ए जो धार बोली हमें कंसीडर करछे तो एज रो सेंटर रे जदि एटम रहला बिकॉज़ हमें जानछे एटम इज स्फेरिकल इन शेप स्फीयर लाइक योर बॉल भलिया गोटे एटम देखिया को स्फेरिकल शेप तो गोटे स्फीयर जदि हमर एज रे रहला तो कंसीडर करो तले हम पाखरे केते एज रहउची गोटे क्यूब रे केते एज टोटल रहला दैट इज 12 एजेस दिस इज योर 1 2 3 4 then again say bolia empty 1 2 3 then 4 then itala this is your 4 तो there are 12 edges तो बतन चेक करो एज रे जो एटम डा रहिला तार कंट्रीब्यूशन फॉर दिस यूनिट सेल केते रहबो 1/4 रिमेंबर दिस इज 1/4 मो ऑलरेडी तुमको देखे सारची दिस इज योर 2 मो ऑलरेडी कहि छी तुमको ए भली हमर रहिला तीटा यूनिट सेल अगेन या ऊपर भी यूनिट सेल रख देली या ऊपर भी यूनिट सेल रख देली हे गला मोर चारिटा यूनिट सेल व्हिच टचेस इच अदर सेम साइज मो पाखरे नाही तो मु देखे पारनी आ किछि प्रॉपर्ली तो दिस इज योर यूनिट सेल तो मार्क करो ए जो एज रे जो एटम रहिला से साइमल्टेनियसली आपको भी टच करूची आर एज को भी किछि पोर्शन तार रहिला हाफ पोर्शन this is 1/4 portion this is 1/4 portion since atom is spherical in shape that is not circle हेतले तो एथरे आधा रहिथांदा but sphere अछि तार ऊपर पोर्शन भी रहला this is not 2 dimension this is 3 dimension तो एठी मध्ये यार एज ये भी एज को लागिला ये मध्ये एज को लागिला तो हाफ पोर्शन जदि तल लेयर रे मोर अटैच हे गेला आ हाफ पोर्शन मोर ऊपर लेयर रे मोर अटैच हे गेला त माने चारिटा unit cell को 4 unit cell को तार contribution रहउची so the contribution for each unit cell is 1/4 and there are 12 edges so the contribution is 1/4 into 12 the contribution is 3 so at edges the contribution is 3 for the atom There are
3 number of atoms present at 12 edges, total number of 3 atoms. So बर्तमान हमें कंसीडर करबा types of crystal system and Bravais lattices, that is your Bravais के जने French mathematician. सो आम जमी अलरेडी पढ़ी सारी गोटे क्यूबिक टाइप क्रिस्टाल सिस्टम रे पढ़े से भाई आम पाखे 7 टाइप रो क्रिस्टाल सिस्टम्स रोचे. तो 7 टाइप रो क्रिस्टाल सिस्टम आसला कौटू डिपेंड कला तार एज लेंथ एंड एंगल्स बिटवीन दिस एजेस. मीन्स जदि मुझे जगह गोटे क्यूब कनसीडर करुच्ची देख जदि ये गोटे क्यूब अलरेडी मुझे तुमको बुझे सारी डिफरेंट टाइप रो क्यूबिक यूनिट सेल आम पढ़ी सारी. सो हियर इज योर क्यूबिक यूनिट सेल नेली मु एनी टाइप रो गोटे क्यूब बोली मु कनसीडर करुच्ची. सो ये जो क्यूब रहा आम अलरेडी जानी गोटे क्यूब तार लेंथ इज इक्वाल टू लेंथ इज इक्वाल टू ब्रेड्थ इज इक्वाल टू हाइट. ठीक अच्छे. दैट मीन्स सपोज मुझे या कनसीडर कली मु तो कहती आम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करुचे. तो सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. सो द एज लेंथ, दिस इज योर एज लेंथ एक्स एक्सिस रे मुनेली ए, वाई एक्सिस रे कंसीडर कली एज लेंथ को बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. दिस इज योर एज लेंथ. 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल आम पिक्चर करछे तो ताको बुझिबा को चेष्टा करिवो, इमेजिन करिवा को चेष्टा करिवो. सो दिस इज योर एज लेंथ ए. सो या वाई एक्सिस रे आम एज लेंथ नेले बी एंड जेड एक्सिस रे आम एज लेंथ नेले सी. एंड वी ऑलरेडी नो इन क्यूबिक यूनिट सेल लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट. दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. एंड द एंगल्स in cubic system a is equal to b is equal to c. ठीक अच्छे. and the angles between b and c is considered as alpha. remember angle between b and c, that is axis y and z, is known as alpha, and the angle between a and c is termed as beta, and the angle between a and b is termed as gamma. that is एक्स आउ जेड एक्सिस भितर एंगल को आमे नोचे अल्फा बोली कंसीडर कले, जेड आउ एक्स भितर एंगल को आमे बीटा नेले एंड एक्स आउ वाई भितर एंगल को आमे कंसीडर कले गामा. सो दीज आर 6 पैरामीटर, दैट इज 3 एज लेंथ ए बी सी एंड 3 एंगल्स, दैट इज योर अल्फा बीटा गामा. तो ये जो एंगल्स आउ एज लेंथ को ताको आमे प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करिया पाई नोचे. मु मन इच्छा आपको एक्स वाई जेड एमती नहीं पारि ना, जदि भी नौची तो सही अनुसार मोर एंगल्स भी चेंज हम. जदि मुझे एक्स एक्सिस नहीं पारि, वाई एक्सिस नहीं पारि, जेड एक्सिस नहीं पारि, तो सही अनुसार ये पैरामीटर भी चेंज कर. तो मुझे जो अनुसार रिप्रेजेंट करुच्ची आमको सही अनुसार ही जावाक पड़ो, कहीं सही अनुसार एगुड़ा सब डिफाइन कर. सो बी केयरफुल अबाउट इट. सो दैट इज इन क्यूब, दिस इज योर एज लेंथ. Consider x axis, the edge length as a, and in y axis the edge length is b, and in z axis the edge length is c, and the angle between y and z, that is b and c, is alpha, c and a is beta, and a and b is gamma. So these are 6 parameters. So depending upon, and we know in cubic crystal system the edge length, that is a is equal to b is equal to c, and the angles alpha is equal to beta is equal to gamma, which is equal to 90 degree. We already know about cubic crystal system. So यहाँ पर बेस करके हमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जगह प्रेजेंट रहउछंती. तो हमें पाइथिले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 टाइप रो रहउतला, सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. तो सेही परी हमर जो पैरामीटर रहला ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, दिस आर 6 पैरामीटर. जदि पैरामीटर्स हमर चेंजेस आसीबो तो ता अनुसार हमर डिफरेंट टाइप रो क्रिस्टल सिस्टम्स चेंज आसीबो. लाइक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भली आउरी मध्ये हमर डिफरेंट टाइप रो क्रिस्टल सिस्टम रहबो. सो देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम रहउची, एंड से क्रिस्टल सिस्टम रे हमर डिफरेंट टाइप रो लैटिस, जेमति क्यूब रे हमर लैटिस हमें पाउथिले सिंपल बीसीसी एंड एफसीसी, सेही भली हमर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम रो डिफरेंट टाइप रो लैटिस रहबो. सो ताकू स्टडी करथिले हमर साइंटिस्ट के फ्रेंच मैथमेटिशियन, दैट इज योर ब्रेविस
बोली आम कौ जनाशुना तो सी 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस आर स्टडीड इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम को कंसीडर करके से 14 टाइप रो लैटिस देथिले दैट इज योर आइदर सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर और एंड सेंटर के को टाइप रो क्रिस्टल सिस्टम रे शो करूची सो आमे ताको भल से स्टडी करबा से जिंस गुडा को क्लियरली बुझिबा मन रखिबा एंड मु ता पय गुडे शॉर्टकट ट्रिक दोची जोटा कि तुमको इजियर होबो मन रखिया पय सहज रे तुमे मन रखि दिबो सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिसेस सो 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम कोन आसबो सो दिस इज योर ताको गुडे टैबुलर फॉर्म रे आमे पढ दबा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम सो क्रिस्टल सिस्टम पाई हम रिप्रेजेंट दोचे C T O R H M T तो मैं मन रखिया पाई फॉर्मटा यूज करछि मु गोटे ट्रिक यूज करछे C TOR H M T C T O R H M T you have to remember this so C stands for cubic जाटा कि हमें पढ़ी सारछ ऑलरेडी then T stands for tetragonal O stands for orthorhombic R stands for rhombohedral H stands for hexagonal M stands for Monoclinic and T stands for Triclinic याको मन रखिबो दिस इज C TOR H M T C stands for cubic T stands for tetragonal O stands for orthorhombic R stands for rhombohedral H stands for hexagonal M stands for monoclinic T stands for triclinic so गोटे नंबर मन रखिबा पाई that is types of लैटिसेस ये केते प्रकार लैटिस शो करछ सो हम देखिबा सो लैटिस हमर रहला क्यूबिक पाई दिस इज योर नंबर मन रख 3 2 4 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 सीरियली मन रखिया पड़ो एपट सेपट किछि करबनी C TOR H M T तो से अनुसार 3 2 4 1 1 2 1 so 3 stands for हमें देखा लैटिस दैट इज क्यूबिक पाई ऑलरेडी क्वेश्चन दिस इज योर सिंपल और प्रिमिटिव देन बॉडी सेंटर मु शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन दोची एंड फेस सेंटर सो 3 टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम सिंपल बॉडी सेंटर face center then 2 stands for simple and body center then orthorhombic so maximum number of lattices shown by orthorhombic that is 4 that is your all the 4 types that is simple BCC FCC and ECC simple body center face center and end center in rhombic this is one simple हमर सब जगह रे हमें पाइबा नियति भाबरे तो this is hexagonal that is also simple monoclinic 2 so that is your simple and face centered simple and sorry this is your end center simple end center and for triclinic this is your simple ठीक अछि सो हमर रहला 3 2 4 1 1 2 1 सिंपल पाई हमें कंसीडर क्यूबिक पाई हमें कंसीडर करले 3 टाइप टेट्रागोनल पाई हमें ले 2 टाइप ऑर्थोरोम्बिक पाई ऑल द 4 टाइप्स रोम्बोहेड्रल पाई 1 टाइप हेक्सागोनल पाई 1 मोनोक्लिनिक पाई 2 ट्राइक्लिनिक पाई 1 so this is your 7 type crystal system and there are 14 type of lattices goni dio 3 to 5 then 5 4 9 9 plus 1 10 plus 1 11 plus 2 13 plus 1 14 type रो possible lattices हमर arrangement करछंती ब्राविस तो बतन यार पैरामीटर्स को हमें कंसीडर करबा तो पहले मो पाखरे स्पेस अभाव अछि तो माको लिबेली तो क्लियरली ताको देखिबो सो फर्स्ट हमें कंसीडर करबा एज लेंथ
पूरा क्लियरली मन रखिबो सो फॉर सिंपल आम जानी एज लेंथ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी परफेक्ट ऑर्डर जो तुम ताको सीरियली मन रखिबो फॉर टेट्रागोनल ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी ए और बी दीटा को एज लेंथ समान किंतु बी ए और बी सहित सी हमर समान न दिस इज अनइक्वल आसला ऑर्थोरोम्बिक पाई हमें कंसीडर करछे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी केही भी एज लेंथ समान हो समस्त एज लेंथ डिफरेंट रहइबो रोम्बोहेड्रल पाई अगेन पुनी हमें कंसीडर करबा जस्ट लाइक योर फर्स्ट वन दिस इज योर ए बी सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हेक्सागोनल ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी and monoclinic A is not equal to B is not equal to C and in triclinic again A is not equal to B is not equal to C so order wise मन रखिबो तो मन रखिले तुम भाई इजियर हे जिवो मन इजिली तुम एटा मन रखि परिबो देन आमे नोचे एंगल्स दैट इज योर एक्सियल एंगल्स एक्सिस भितरे कोन एंगल रहला एक्सियल एंगल्स सो एठे मध्ये आमे ऑर्डर फिक्स करि दैछे एंड सामान्य चेंजेस आछे ऑर्डर गुडा करे से ऑर्डर को तुम क्लियरली मन रखिबो तो एक्सियल एंगल पाई हम एठी जानथिले अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर क्यूबिक अगेन फॉर टेट्रागोनल सेम हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड आल्सो फॉर ऑर्थोरोम्बिक अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री and for rhombohedral alpha is equal to beta is equal to gamma which is not equal to 90 degree ए तीनटा एंगल समान किंतु 90 डिग्री सहित समान बट हेक्सागोनल हम एठी कंसीडर करछे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हियर गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री 120 डिग्री रहइबो गामा एंड इन मोनोक्लिनिक alpha is equal to gamma is equal to 90 degree but here beta is not equal to 90 degree and last one triclinic alpha is not equal to beta is not equal to gamma and is not equal to 90 degree कौन सी भी एंगल समान नहीं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री So remember all these parameters easily by using these tricks 5 minutes लागिबो मात्र तुम एटा को भल से देखिबो क्लियरली पूरा परफेक्ट ऑर्डर अछि जदि तुम एई ऑर्डर फिक्स करूछो बुक्स अनुसार गले तुमको मन रखिया पय डिफिकल्ट होबो तो ऑर्डर अनुसार जाओ ट्रिक अप्लाई करो इजियर बहुत होबो तुम मन रखिबा पय सहजले मन रखि दबो सो बाकी रेस्ट सब केस रो गोटे दिटा एग्जाम दिया है तुमको तो से एग्जाम नॉट नेसेसरी गोटे गोटे जाना आम क्यूब तो ही पढ़ा दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म क्यूबिक सिस्टम आम रहा सिंपलेस्ट क्यूबिक सिस्टम जोटा आम रहा सब सिंपल फॉर्म जोटा कि आम ही पढ़ी पढ़ी आ बाकी रेस्ट आम ये ही रहीगला ये आ विषय आम कि पढ़ानी केवल पारामीटर्स गुड़ाक टे मन रखा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑर्थोरोम्बिक देखो आम सब मैक्सिमम टाइप ऑफ लैटिस दैट इज योर 4 टाइप्स सब जगह केस दैट इज सिंपल भी देखो बॉडी सेंटर फेस सेंटर एंड एंड सेंटर 4टा केस आम ऑर्थोरोम्बिक सो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन जिनस तो जदि आम आगू को केवल बढ़ा क्या नहीं क्यूबिक टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम को लेकिन आगू बढ़ा सो नेक्स्ट क्लास आम अप टू ये पर्यटन शेष है नेक्स्ट क्लास आम ऑलरेडी जो नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट हिसाब करते तार आम किछटा न्यूमेरिकल्स करवा थैंक यू।